last one is thinking and concept formation, conceptual understanding. This is what it is, cognitive psychology. So to start with it, how can you define the term attention? So can you tell me? Earlier also, you must have studied the term attention means what? Correct. Paying attention to details, it is good, but another very simple and precise definition of attention, it is given by William Wundt, the person who separated psychology from philosophy and started first scientific lab in Germany. William Wundt, in his book Principles of Psychology, Volume 1 and 2, the way he has defined attention is purposeful mental activity is what is attention. Purposeful. We are attentive when we learn our driving. We are attentive when we learn something. We are attentive while we are, using our cell phones. But as the thing becomes used to, then फिर attention के अलग अलग types भी होते हैं, selective, divided, and so. And this is again the catch for nowadays, because people are becoming very very distractors. Zoom पे लेक्चर अटेंड करना और उसी वक्त ब्राउजर खोल के कुछ और चेक करते बैठना, एकीकडे मोबाईल वरती हे करायचा आणि मग नंतर टिकटॉक असेल, व्हाट्सएप असेल, जीमेल असेल, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, इंस्टा होगा, और कुछ ना कुछ करते रहना. So attention in all these various areas, it is getting divided, it is getting separated. एक्टिविटी तो होती है नाम के लिए कि हाँ हमने सेशन अटेंड किया, हमने क्लास अटेंड किया, हमने लेक्चर, हमने मीटिंग अटेंड की, बट एक्चुअल उसकी क्वालिटी मिस होती है बिकॉज हमारा अटेंशन डिवाइड होता है इन सारी चीजों में. So basically, we as human being, we all are information gathering creatures. इनको पूछो, इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, इथून माहिती घ्या, तिथून माहिती घ्या, असं करा, मग तसं करा, थोड़ा पढ़ के देखो, थोड़ा सर्च करके देखो, थोड़ा ट्राई करके देखो. By various ways, multiple ways, we are just gathering information again and again and again and again. And in that, we become attentive for a while. एवढ्या सगळ्यामध्ये आपण कधी अटेंटिव्ह असतो? when highly selective in attending the information, if that information is very very unique, it is new, it is really appealing to us, or that is something which is having very total different entity, काहीतरी वेगळी ओळख आहे, तेव्हा मग आपल्या त्या गोष्टीकडे, त्या व्यक्तीकडे, त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशन कडे we become more attentive. If we are used to it, then we won't be able to pay that much equal attention or promptness in attention. And that's why attention is not, यूं ही होता है ऐसा नहीं है. लक्ष जातं असं नसतं, आपण लक्ष देतो म्हणून तिथे लक्ष जातं. हम उस चीज की ओर ध्यान देते हैं तो वो ध्यान में आता है कि हाँ क्या क्या है.
So attention, it is purposeful mental activity, it is conscious mental activity. So there are basically two levels, and this is again most important factor: sensory and cognitive. Now just tell me, instead of using, this even PPT and any other thing, instead of that, मैंने ये स्क्रीन शेयरिंग वगैरह सब कुछ स्टॉप किया और मैं सिर्फ अगर ऐसे बोलते गया, now today onwards we are going to focus on cognitive psychology, there are 12 domains, the first domain is attention and blah 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 blah. आपका इंटरेस्ट रहेगा वहां पे उस सेशन में? No, sir. Same thing, it is applicable for children's also while teaching learning method. स्कूल में भी यही एप्लीकेबल है, कॉलेज में भी यही एप्लीकेबल है, इसके बाद भी जॉब में भी यही चीजें एप्लीकेबल है. दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी is getting accepted day by day, day by day, day by day, because they are so किती इफेक्टिव्ह आणि क्रिएटिव्हली लर्न करू शकतो आपण. जो चाहे वो हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, कलर इफेक्ट, देन इवन ग्राफिक एंड ऑल एवरीथिंग. मूवीज क्यों याद रहते हैं? क्योंकि मूवीज में साउंड इफेक्ट होता है, विजुअल इफेक्ट होता है, सम चेंजेस आर देयर, एंड प्लस वी आर फोकस. थिएटर में 3 घंटे जो बैठते हैं तो सामने सिर्फ वो मूवी रहती है, आजू बाजू में कुछ नहीं रहता. लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या आए, तो बोर पुस्तक असतं सर, उसमें सिर्फ कंटेंट टाइप किया रहता है, ना डायग्राम, ना कुछ ऐसे कलरफुल, ना कुछ ना कुछ. So it is our choice, it is our job how to make our study more interesting, and it will be our job how to make teaching learning process more effective, more interesting if we are working in school. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्लो लर्नर होंगे, तो उनको कैसे सिखाना है ये हमारा काम है. इन द सेंस उनका वो इंटरेस्ट वहां पे कैसे डेवलप करें, इट विल बी आवर जॉब. मैथ्स भी हमें सिखाना ऐसा नहीं, लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे हमें काफी स्कोप है. सो तारे जमीन पर मध्ये हा पाठ आता ऍप्लिकेबल आहे की हाऊ he developed that child's attention span. So audio visual cues, they are very very important to learn effectively. And second thing is cognitive. Excess is always dust. पीपीटी और सिखाने वाले सर मैम और उनका पीपीटी ये इतना है तो ठीक है, पीपीटी भी चालू है, बातें भी हो रही है, केओस भी है, बाजू में कोई डीजे पे नाच रहा है, गा रहा है और कुछ है, आणि मग आणखीन मध्येच असं कोणीतरी काहीतरी ऑफ द ट्रॅक काहीतरी विचारते, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो भी अटेंशन अफेक्ट होगा. सो इट इज अ डोमेन. Second thing is cognitive neuroscience. What information or what kind of knowledge you have about this? Cognitive neuroscience, neurotransmitters, secretion, psychology effect, types of neurotransmitters, its levels and all, everything कुछ तो मालूम होगा? Anyone? You must be aware about Shivaji Maharaj's Agra escape story, right? How he escaped from Agra. हिस्ट्री में पढ़ा है ना, सुना है ना, मालूम है? Yes, sir. हाँ. That single incidence we can study from this cognitive neuroscience perspective. This kind of applied way अगर
आपके पढ़ाई में होगा, then sky is the limit for you in this field. Why and how it is so? Because cognitive neuroscience, it is a joint venture of these two experts, psychologists and neuroscientists. Cognitive psychologists, they study observations, recordings, behavior reactions, and everything for laboratory findings. Are physiological changes associated with planning, judgment? Like some of you might have done some experiments. और फिर तब के रिएक्शन टाइम कैसा है, कितने ट्रायल्स लगे कोई एक पर्टिकुलर मेज कंप्लीट करने के लिए. एनाइट टावर, वो एक पिरामिड, एक रॉड से फिर दूसरे रॉड में शिफ्ट करने के लिए कितना टाइम लगा, और फिर ट्रायल वाइज वो टाइम क्यों डिफर होते का, एवरीथिंग. दिखने में सिर्फ वो पर्टिकुलर बिहेवियर है, बट सायकोलॉजी इट इज देयर. बोर्डम आहे, फटीग आहे, एंथुसियाझम आहे, इंटरेस्ट आहे, विलिंगनेस आहे, की आणखीन तसं क्युरियोसिटी, एव्हरीथिंग. बट cognitive neuroscientists, they will explain for these findings, neurological explanations for their findings. For clinical psychology specialization also, this domain, it is very important. Then only you will be able to diagnose the disorder appropriately, and then only you will be able to understand it in more deeper sense. Which part of the brain gets activated at the time of planning? For example, in cerebral cortex, we have 4 lobes: frontal, parietal, occipital, and temporal lobe. This frontal lobe, it is most important for higher order cognitive functioning, like thinking, planning, judgment, reasoning, understanding, thinking about even consequences also. Right hemisphere, it works for it controls the left portion of the body, and left hemisphere, it controls the right portion of the body. And some other frontal lobe is there. So मग तसेच आणखीन बाकीचेही आहे. Why I have mentioned about Shivaji Maharaj and Agra escape. It is assumed, it is expected कि उनका फ्रंटल लोब कितना डेवलप होगा. जरा सोच के देखो, 3 महीने से आप किसी एक ऐसे अननोन प्लेस पे, you are in a way prison, in a way you are surrounded by 3 lakh people, and that too armed forces, soldiers. You are miles away from your hometown. आपके साथ आपका 9 साल का बेटा है, आपके कुछ हार्डली गिने चुने 50, 60, 70, 80 लोग हैं, और आप ऐसे लोगों में हो कि जिनके पास तलवार है, तोप है, और बहुत कुछ है. Without using a single smallest weapon, how he managed to escape from it. कितना उनका फ्रंटल लोब डेवलप हुआ होगा, कितना उनका ब्रेन एक्टिव रहा होगा, कितना उनका ब्रेन शार्प रहा होगा in solving the current problem which he was facing at that time. How he has controlled his emotions, his anger, and everything. Such kind of study is what is joint venture of cognitive neuroscience and or psychologist and even neuroscientist. सिर्फ कहना कि हाँ शिवाजी महाराज बहुत ऐसे थे और वैसे थे, with due respect, of course वो ऐसे थे. But being a science student, being a student of psychology, can we study the same concept more in detail, more in depth? ऐसे तरीके से अगर आप सोचोगे, ऐसे तरीके से अगर आप ये कोई भी टॉपिक अगर आप स्टडी करते हो,
and then if you start writing your blogs, your articles, then it will be weighted. इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे, उसके बाद अगर आप 4 लोगों के सामने आते हो तो आपका वेटेज होगा. प्रैक्टिस दिस पैटर्न फॉर दीज 2 years. No one will have even a dare to stop you in your professional life. क्योंकि आप जो कुछ बातें करोगे वो यूं ही नाही करोगे, आप 4 चीजें 4 बुक्स रेफर करके बात करोगे. त्याच्यानंतर जे काही तुम्ही ब्लॉग्स वगैरे लिहा, आता नवीन पॅटर्न काय आहे तर ब्लॉग लिहिणं किंवा काही आर्टिकल लिहिणं वगैरे. एक 20-25 साल पहले की बात अलग थी कि हाँ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह. बट अभी यंग जनरेशन में जो है वो, एंड इवन बाय गिविंग अप्रोप्रिएट रेफरन्सेस, इंस्टाग्रामला किंवा कुठे काहीतरी उगाचच असतं कि साइकोलॉजी सेज के इतना इतना है तो ये फ्रेंडशिप है और लव में ये होता है, फिर स्लीप में ये होता है. ऑल दैट इज एब्सोल्युटली फेक एंड टोटली बुलशिट. क्या रेफरेंस, क्या सोर्स, कुछ भी कोटेशन नहीं होता है. ऑथेंटिकेशन क्या है उसमें? बट अगर आप कुछ इस तरीके से पढ़ाई करके रेफर करके खुद का, ज्याला आपण मराठीमध्ये चिंतन म्हणू, आपण काहीतरी वाचतोय त्याच्यावर चिंतन करून मग आपण काहीतरी लिहितो, सो इट विल डेव्हलप युअर क्रिटिकल थिंकिंग स्टाईल, एनालिटिकल स्टाईल, एव्हरीथिंग. थर्ड डोमेन इज कॉन्शियसनेस. So being conscious, it doesn't mean that वाइवा वाला कॉन्शियस, एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे सर मैम क्या कहेंगे, कोई हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में वगैरह वगैरह. सो दैट कॉन्शियसनेस इट इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर, बट totally different approach to study in modern cognitive psychology. Consciousness again having 2 shades, that is current awareness of external circumstances. आज का दिन कौन सा है, आज की डेट क्या है, हम कहाँ पे बैठे हैं, हम क्या अटेंड कर रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, सच में हम हमारे नोट्स निकाल रहे हैं या फिर नहीं निकाल रहे हैं. अगेन इट इज रिलेटेड विद अटेंशन. या फिर ऐसा है कि हाँ ऑन करके रख दिया और फिर हम हमारा कुछ कर रहे हैं. So external circumstances, awareness of external. Equally, being a true and genuine student of psychology, one should be equally conscious about internal awareness. How far am I aware about my own thought process, my emotions, my regulation of emotions, my actions? Am I able to control my actions? Am I happy with myself? Do I really know my own resource list for happiness? The things, list of the things which gives me happiness also. खुद का अवेयरनेस खुद को होना भी बहुत जरूरी है. अक्सर ऐसा होता है कि हमें हमारा अवेयरनेस होता है लेकिन लोगों का अवेयरनेस होता है. मग त्यांनी कसे कपडे घातले, ती त्याला काय बोलली, उसका फोन कैसा है और मेरा वर्जन कैसा है, आणि मग त्याचा आयपॅड आहे आणि माझ्याकडे ऍपल आहे नाहीये. इसके आगे क्या, इसके आगे भी तो बहुत कुछ होना चाहिए. So this external in the sense, as I said about even situations, surroundings, people. Internal, it is related with thoughts, self-concept, and all these things. It is important. And fourth one, the last point for today with reference to this, that is developmental psychology as important factor in scope of cognitive psychology or the domain of it. Developmental, a separate field of psychology which studies about human development. I'm sure all of you must studied this. From conception to death. And at every stage and phase of life, physical changes के साथ साथ mind में क्या क्या changes होते हैं, our interest, ideas, preferences,
everything gets changed. Why and how? So the manner in which a child develops the ability to speak, babbling, and then फिर एक एक करके धीरे, ability to speak, to learn and understand the world around him. Some people are very good in understanding their surroundings, and so they become more successful. हम किससे बात कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं, हमारा डिग्निटी से नहीं, बट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट यस हमारा एज क्या है और जिससे हम बात कर रहे हैं उनका एज क्या है. सो इट कम्स अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस. Some people have this kind of this particular maturity at very young age. बहुत कम समय में कुछ लोगों को ये समझ आती है कि हाँ किनसे और किस तरीके से बात करनी चाहिए. और कुछ लोग ऐसे होते हैं नाम के लिए बड़े होते हैं, but they don't have that sense how to talk, how to communicate, how to express, how to listen. Developmental side. So उनकी वो development and growth अलग ही होती. So they study person's biological, emotional, cognitive, and as I said just social development across the lifespan. It is not related with one particular segment of life, but across the lifespan. The thing which we are going to study in second, third chapter, Jean Piaget's theory, even Vygotsky's theory, with reference to language development and even some other way also. Internal representation, abstract thinking. कि क्यों कोई एक पर्टिकुलर चीज बचपन में ही हम सीखते हैं और क्यों ऐसी चीजें आफ्टर 8, 9, 10 standard only we do learn. Jean Piaget's theory has very wide applications in education stream because with reference to again child development. So from conception to late adulthood, through all maturational experiences, this developmental psychology as a part of domain of it helps a lot, it matters a lot. Yes, sir. Yes, okay. Now